Hello students, I am back again with my new lecture and this time this is new chapter, that is chapter number 5, rural development. Students पहले अपन ने particularly starting के 3 chapters कर लिए हैं. Again, these 3 chapters I told you is of how many marks? 12 marks. अब जो unit आपने start करनी है that is a unit which is of current challenges faced by India. And that is a very basic unit and उसका आगे मैंने importance बताया है. I've told you the marks. So before getting started, just subscribe my YouTube channel for getting more updates on the economics, PST and accountancy. Recently I'm posting economics lectures and with little busy with my school work also. So in that case आपके पास अभी freely economics lectures available है. Macro पूरा uploaded हो चुका है, micro पूरा uploaded हो चुका है, stats पूरा upload हो चुका है और Indian economic development is going on, and this is the lecture 1 of this particular session. So let us just start the topic. Hello everyone. Now let us just start the topic. See, basically अब जो अब यूनिट पढ़ रहे हैं that is current challenges faced by Indian economy और इसके अंदर students हैं कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many chapters? We have 6 chapters under this particular unit. फिर उसके बाद बेटा this is a unit which is a very scoring unit and total marks allotted to this unit is 22 marks. And basically इस पे आप टॉपिक्स देखें तो बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपन क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन is something new that I will cover. Infrastructure is also being studying from class 10th. Now coming to poverty, beta poverty chapters are already uploaded. You can just visit my YouTube channel and you can get the poverty lectures as well free of cost. Next is employment and next is rural development. So मैं अभी rural development के बारे में बात कर रहा हूँ और यहाँ से particularly see CBSE has not given a specific bifurcation कि ये एक चैप्टर कितने मार्क्स का है. उन्होंने यूनिट का बाइफिकेशन दिया हुआ है. This unit is overall of 22 marks and this is basically a unit which is a very scoring unit. याद रखना कि आपके लिए बहुत स्कोरिंग यूनिट बन सकती है अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द टुडेस करंट टॉपिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट? अपन ने बहुत बार ये शब्द सुना है that rural development is there. What does this particular rural development is? Now basically my whole this particular chapter अभी जो हम lectures में पढ़ेंगे ये इन topics पे based रहेगा. First, what is the meaning? Why rural development is required? Third is what are the objectives of rural development and what are the areas covered in the rural development. कौन से areas आपने cover करे हैं rural development के अंदर. Basically human capital formation आ सकता है इसमें, infrastructure आ सकता है. You can go for other particular things which are also covered in particularly this rural development. Let us just start with today. What is the meaning of rural development? See, the process of improving the quality life and economic well-being of rural area people. See, rural areas के अगर आप quality life increase कर दोगे तो ultimately क्या होगा? That the rural development has started. वहाँ आप good education दो, वहाँ आप good health care दो. If these particular healthcare and good education facilities are there, means you are uplifting the economic standards of the rural areas people. आज अगर रूरल एरिया वाला पर्सन कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीख जाए या फिर he is a highly qualified person, so in that case means our rural areas are getting developed. Secondly, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर अच्छी डेवलप होना शुरू हो जाए, हेल्थ सेंटर्स अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाए, so in that case also you are getting a good health support. Now who is involved in this particular rural development? Let us see. The rural development is for the people engaged in what? Basically farm activities and non-farm activities. अब farm activities क्या होंगी?
Farm activities are those activities which are recently related with the agriculture. नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या होंगी? नॉन फार्म एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर आप कंसीडर करते हैं. दैट इज ऑल्सो द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. आप समझिए, द नॉन फार्म एक्टिविटीज आर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज पीपल. टेक फॉर द एग्जाम्पल, हमने सुना है एग्रीकल्चर इज अ सीजनल बिजनेस. इट इज नॉट अ बिजनेस विच विल कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर. जब सीजन होगा तभी ग्रोथ होगी, एंड जब सीजन नहीं है तो ऑफ सीजन पे फार्मर क्या करेगा? सो इन दैट केस ऑफ सीजन में फार्मर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इन ऑफ सीजन farmer will go for non-farm activities. One of the non-farm activity is dairy farming, poultry farming. These are what? These are non-farm activities, and these are also helping in rural development. कैसे? We will be continuing and we will see that how government is focusing on that. Now, why rural development is required? First, 1991 के बाद हमने जैसे आपने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इग्नोर्ड एंड इंडस्ट्रीज एंड सर्विस वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस आफ्टर द एलपीजी पॉलिसी. तो भैया रूरल एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? एंड नियरली 3/4 ऑफ अवर टोटल पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज. आपने लॉकडाउन के समय देख ही लिया कि कितने माइग्रेंट लेबर्स अपने घर को चल दिए. सो भैया हमारी अर्बन सिटीज में रह कौन रहा है? अर्बन सिटीज में रहते हैं most of the rural areas which are rural area person which are coming here for job. अब वो जॉब ही नहीं थी तो कोरोना वायरस के चलते they shifted towards their hometown, towards their rural areas, and that was the major concern of the government. So 3/4 population is still residing in rural areas. Lack of employment opportunities, वहाँ पे employment opportunities नहीं है, इसीलिए तो person urban areas में आ रहे हैं. अगर वहाँ पे opportunities मिल जाती तो वो यहाँ पे particularly नहीं आते. Next is share of agriculture sector to GDP. अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर डिक्लाइन होते जा रहा है, तो उस पे गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है? दैट इज द मेजर कंसर्न, एंड इसीलिए रूरल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट, what are the matters of concern? There is a very great matter of concern that nearly 25.7% और मान के चलें कि 1/4 population of the rural area is below poverty line. पॉवर्टी लाइन क्या होती है बेटा? वो पॉवर्टी चैप्टर में हमने एक्सप्लेन करा हुआ है. आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन वेरी एक्यूरेटली. अर्बन के लिए क्या गाइडलाइंस है, रूरल के लिए क्या गाइडलाइंस है, वो पूरे वीडियो लेक्चर में मेंशन्ड है. तो डू विजिट दैट पॉवर्टी चैप्टर. उसके लिंक्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको रिक्वायरमेंट पता चले दैट व्हाट इज पॉवर्टी लाइन. दैट इज द पर्टिकुलर estimate. It is estimate and that is a serious matter of concern. Chaliye, so today's end topic, that what are the areas covered, and after areas I will be winding up today's session. ज़्यादा lengthy नहीं रखते हुए because it's an introductory portion. So let us start with the areas covered under rural development. कौन कौन से areas cover होंगे? First is ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज HRD. आपको वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करनी. कैसे डेवलप करोगे? एजुकेशन से, हेल्थ से, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी particularly healthcare facilities, giving them good employment opportunities. Second is expansion of productive resources. आप अपनी resources वहाँ बढ़ाइए ना, वहाँ पे particularly factories लगवाइए, वहाँ पे particularly employment opportunities increase करवाइए. Second है, third is land reforms. हमने land reforms देखे हैं, वो सिर्फ पेपर्स पे ही रहते हैं. लैंड रिफॉर्म्स अगर एक्चुअल में आ गए, so I bet the overall rural development is to be done. So land reform सिर्फ पेपर में ना रहते हुए उसे एक्चुअल कंसर्न में लिया जाए. Every government shall focus on this, that land reform shall be done on actual basis. It should not be on papers. Next is poverty reduction. Poverty reduction तो मेजर है because अभी बोल दिया कि 1/4 of population is living below the poverty line in rural areas. Next, development of infrastructure. So ये areas कौन cover कर रहे हैं? This particular rural development segment has to cover. I have given a short form that is helped here. H is for human resource, E is for expansion, L is for land reforms, P is for poverty reduction, and D is for development of infrastructure. So यहाँ पे ये बहुत बड़े concern है कि अपने को इन चीजों पे focus करना पड़ेगा.
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे अगर बात करें, सो प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन स्पेसिफिकली टू फीमेल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट। सी मेजर कंसर्न एरियाज में क्या आता है कि फीमेल्स को लिटरेसी से दूर रखते हैं, बिकॉज एज पर देयर ओल्ड ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी कि फीमेल की आगे शादी होगी, शी हैज टू मैनेज अ हाउस, सो शुड नॉट बी गेटिंग हाईली एजुकेटेड, उसको जॉब तो करनी नहीं। बट एजुकेटेड वुमेन, whether it's a working or a non-working, is required for a good family condition. Okay. Second is health facilities for physical growth. आपको health facilities increase करवानी ही पड़ेगी, तो ही जाके upliftment आएगा, तो ही जाके physical growth आएगी। कहाँ पे? रूरल डेवलपमेंट एरियाज में। नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। कौन रिसोर्सेज करेगा? ईच लोकेलिटी हैज टू गिव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट्स व्हाई क्या होगा बेटा, माइग्रेशन कम होगा। अगर रूरल एरियाज में मान के चलो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, किसको मिल जाती हैं? पर्टिकुलर पर्सन को। तो अगर वहीं पे उनका काम हो जाता है तो वो अर्बन एरियाज में क्यों आएंगे? Why will they will come in the urban areas if they are getting the employment opportunities in the rural areas itself? So government has to focus on productive resources. Next is beta land reforms. क्या होते हैं land reforms? It is specifically focusing on the change of the ownership. बताया था अपने को किसको देना है? Towards the tillers of soil. ओके, टिलर्स ऑफ सॉइल को आप क्या बना दो? ओनर। लैंड इज एक्चुअली पास टू दोस पर्सन जो उसे एक्चुअली कल्टीवेट कर रहा है, दैट इज पर्टिकुलर पर्सन विच इज यूजिंग इट फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। वो सिर्फ अपने पास रख रहा है, जस्ट लाइक जमींदार्स, दे आर कीपिंग देयर लैंड idle without any investment, without any agriculture activity. So in that case, agriculture activities उसमें involved नहीं है। This is known as providing land to the tillers of the soil. I already told you, tillers का मतलब क्या होता है? जो उस लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द मेजर इम्पैक्ट। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा? पहला, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बदलेगी, क्योंकि द लैंड इज कमिंग टू द टिलर्स, और वो टिलर्स इतनी मेहनत करेंगे कि उनको प्रॉफिट चाहिए। सेकेंड, इंक्रीजिंग दी प्रोडक्टिविटी। टिलर्स के पास आएगा तो उसे कल्टीवेशन करना ही है। जमींदार क्या करते हैं? दे आर सिटिंग आइडल एंड नॉट यूटिलाइजिंग, बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग दिस लैंड ऑन रेंटल बेसिस एंड गिविंग इट टू अदर थिंग्स। वो उसे एग्रीकल्चर ना यूज करते हुए किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। सो हियर मेजर कंसर्न इज कि लैंड रिफॉर्म्स आने से एक इम्पैक्ट होना चाहिए, दैट लैंड शुड बी गिवन टू दी टिलर्स ऑफ द सॉइल। Next is poverty reduction. Around 30% of the population is still living below poverty line. Serious need for taking poverty elevation programs और वहाँ पे rural areas में, because I told you near about how many population, 3/4 population of country is living in rural areas. और वहाँ पे अगर आप poverty elevation programs नहीं चलाओगे, so what will happen? And poverty elevation programs हमने discuss कर हैं बेटा, poverty chapter में it's already been discussed. Next is bringing significant improvement in the living condition of weaker section. कैसे लेके आ सकते हैं? How can be an idea? We can bring significant change by again giving them alternate employment opportunities. See, I told you that poverty का major reason क्या है? That the person is unemployed. अगर person unemployed होगा, income generation नहीं होगी, income generation नहीं होंगे, so how he will support his family, how he will support his particularly other persons. So in that case, poverty का major reason है unemployment, और unemployment के लिए आपके लिए पहले से ही requirement है. So these were the all areas covered under today's lecture. Thank you students for listening today's lecture. Do follow on Instagram, me on Instagram and Facebook. If you have some particular problems, I will be setting you again. Send me a DM on Instagram or on Facebook. I will be surely replying it. There are many queries coming during the board examination, so it may take time, but I will surely reply to your queries if possible. Thank you, students, for listening today's lecture. Have a nice day, everyone.